We will start in 5 minutes, 5 to 10 minutes. We will discuss 20 algebra question from CAT 2017 slots. हेलो, अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो लिंक. वी विल स्टार्ट इन 5 to 10 minutes. हेलो, you can share this link with your friends also who are preparing for CAT 2018. हेलो प्रतीक. किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग.
Do share this link with your friends also. We will start in 2 to 3 minutes. Hello Samik. तो पहले कैट 2017 स्टार्ट करें स्लॉट की पास्ट ईयर कैट और ज्यादा मतलब और पीछे. फर्स्ट वी शुड कवर स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 और नेक्स्ट वन. हेलो नवीन. ठीक है स्टार्ट करते. शुड वी स्टार्ट? पहले पास्ट ईयर कैट स्टार्ट करते हैं. बोर्ड विजिबल है सबको? चेंज कर देंगे तो दिन में से. fx is equal to max 2x plus 1 3 minus 4x. fx is equal to max 2x plus 1 3 minus 4x where x is a real number. Value of fx. Option A is 1/3,
option B is 1 by 2, option C is 2 by 3, option D is 4 by 3, and option E is 5 by 3. CAT 2016 question. Fx is equal to maximum of 2x plus 1 comma 3 minus 4x, where x is a real number. Find minimum possible value of fx. Try this question. Question 1 is fx is equal to max 2x plus 1 comma 3 minus 4x, where x is a real number, and find minimum value of fx. We want to find minimum value of fx. ठीक है? अब जिसको बेसिक नहीं पता है, the minimum of maximum or maximum of minimum will occur at intersection point. If both functions are one function is increasing and other function is decreasing, that means if one function if one function is increasing like this and other function is decreasing like this, then their intersection point, जैसे हम लोगों को लेट करो max of 2x plus 1 comma 3x minus 3 minus 4x का ग्राफ ड्रॉ करना है. Max of 2x plus 1 comma 3 minus 4x. Let this value is 2x plus 1 and this value is 3 minus 4x. Let this particular value is 2x plus 1 and other value is 3 minus 4x. Now till this point, let this point is A. Till this point, what is the maximum value? Maximum value of is this. Till this point, maximum is this value. Out of this graph, this particular graph and this particular graph, maximum value is this. And out of this particular graph and this particular graph, maximum value is this. That means graph of maximum of this comma this will be this particular value. That means BAC. This will be the graph of maximum of 2x plus 1 comma 3 minus 4x. Now we need minimum possible value of fx. Now this is the minimum possible value. This is the minimum possible value. That means at which point we will get our minimum possible value? At which point we will get minimum possible value? At intersection point of two graphs. That means where two values will intersect with each other, that point will give us minimum value. That means value at which 2x plus 1 is equal to 3 minus 4x. That means 6x is equal to 2. So x is equal to 1 by 3. That means at x is equal to 1 by 3, we will get minimum of maximum. So put this value, max of 2 into 1 by 3 minus plus 1 comma 3 minus 4 by 3. So that value will be max of 2 by 3 plus 1, that will be 5 by 3 comma 5 by 3. So the value will be 5 by 3. So what will be the minimum of maximum? That will be 5 by 3 and that will be your answer. So minimum of maximum or maximum of minimum will occur at intersection point. But those two values, those two functions or three functions, those functions should be, one function should be increasing and other value should be decreasing. Otherwise it cannot be determined. One value should be increasing and other value should be decreasing. Then minimum of maximum or maximum of minimum will occur at intersection point. जैसे अगर लेट करो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को दिया होता that minimum is this, find maximum of minimum, find maximum of minimum. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं minimum का ड्रॉप करते हैं. So this value will be minimum and this value will be minimum. That means this is graph of min of 2x plus 1 comma 3 minus 4x. This is the graph. And what is the maximum value of this graph? Maximum is this again. That means the maximum of minimum will occur at intersection point, or minimum of maximum will also occur at intersection point. So you just have to equate these two values and can find value of x at which you will get minimum of maximum or maximum of minimum. Clear to everyone? This particular concept is clear to everyone?
जैसे इसी में कुछ और हम लोग पूछे, जैसे लेट करो fx इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 3x plus 1 comma 2 minus 3x, find min of max fx, minimum of maximum fx find करना है. Try this question. Find minimum of maximum fx. So min of max will occur at equality. That means when 3x plus 1 is equal to 2 minus 3x, that means 6x will be equal to 1. So x will be equal to 1 by 6. At x is equal to 1 by 6, you will get your minimum or maximum. That will be 3 into 1 by 6 plus 1. That will be equal to 3 by 2. And that will be your answer. So this type of questions CAT में regularly आते रहते हैं. Basic है but वो मतलब important type of question है. ठीक है. Okay, I hope clear होगा first question. Okay, let's move to second question. Let gx is a question 2 CAT 2005. Let gx is a function such that gx plus p is equal to gx, such that gx plus p, gx plus 1 plus gx minus 1 is equal to gx for all real values of x. Then for which value of p fx plus p is equal to fx. Options are 5, option B is 3, option C is 2, option D is 6. For which value of p, this is true for all real values of x, for all x belongs to. So question is gx is a function such that gx plus 1 plus gx minus 1 is equal to gx for all real values of x. Then for which value of p, fx plus p is equal to fx for all real values of x. And you want to find value of p. ठीक है, p की तुम्हें value find करनी है. Remember I posted a direct formula of this, that is a period of 6 function. This gx plus 1 plus gx minus 1 is equal to gx is a period of 6 function. 6 period type function है ना ये. This is a period of 6 function. मैंने कल परसों ही डाला था ना, कल या परसों मैंने पोस्ट किया था. gx plus 1 plus gx minus 1 is equal to gx is a period 6 function. ये इस टाइप का क्वेश्चन कैट में कई बार रिपीट होता है. ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ये फंक्शन है. इसका पीरियड जो होता है दैट इज 6. पीरियड मींस हर 6 वैल्यू के बाद दैट विल गेट रिपीटेड. वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल गेट रिपीटेड. ठीक है, चलो मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व होगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन. हम लोगों को गिवन है gx plus 1 plus gx minus 1 that is equal to gx. ठीक है, and we want to find, repeat करो gx plus 1 plus gx minus 1 is equal to gx. And our motto is to convert these 3 values into 2 values. अच्छा, ये gx है. This is gx plus p is equal to gx. So our motto is to convert this g value, these 3 g values into 2 values. Gx plus p is equal to gx. Our motto is to convert in this form. So how to convert this in this form? So let's replace x by x plus 1. Replacing x by x plus 1. So this value will become gx plus 2 plus gx is equal to gx plus 1. ठीक है, अगर x को x plus 1 से replace करेंगे, you can replace anything by any value ना. Let तुम्हारे पास x is equal to y है, that will satisfy for every value of x and y. That means if you will put x is equal to 2, you will get y is equal to 2. You will get put x is equal to 3, you will get y is equal to 3. That means ये value हर के लिए true है ना.
अगर मैं x is equal to y रख रहा हूं, that means this is true for every value of x. Same here, if gx plus 1 plus gx minus 1 is equal to gx given है, we can replace x by any value, that should satisfy. किसी भी real value से replace करेंगे, that should satisfy. ठीक है, तो replacing x by x plus 1, that will be gx plus 2 plus gx, that will be gx plus 1. ठीक है, this is your first equation, this is your second equation. If you will add these two equations, this will get cancelled out, this will get cancelled out. You will get gx plus 2 plus gx minus 1, that is equal to 0. You will get gx plus 2 plus gx minus 1 is equal to 0. अब तुम्हारा अगर मोटो देखो, you want to convert in form of gx plus p is equal to gx. That means ये तो तुम्हें लग रहा है सही फॉर्म में है. That means gx plus p ये तुम्हें समझ आ रहा है, हाँ ये इसी फॉर्म में है. बट क्या gx इसी फॉर्म में है? यहाँ पे gx है, यहाँ पे gx minus 1 है. So again you will replace x by x plus 1. So you will get gx plus 3 plus gx is equal to 0. अच्छा अभी मुझे बताओ, अभी क्या सेम फॉर्म है? बताओ, बोलो बोलो, क्या अभी भी सेम फॉर्म है ये? No, अभी सेम फॉर्म नहीं. This is in plus form, this is not in plus form. So this is nothing but gx plus 3 is equal to minus gx. But we need gx plus p is equal to gx. gx हम लोग को चाहिए. So again replace x by x plus 3. When you will replace x by x plus 3, you will get gx plus 6, that is equal to minus gx plus 3. अगर तुम ध्यान दो तो gx plus 3 is equal to minus gx है. So when you will put gx plus 3 as minus gx, you will get as gx. So now tell me gx plus 6 is equal to gx. That means if you will put x is equal to 1, so g1 will be equal to g7. If you will put x is equal to 2, so g2 will be equal to g8. If you will put x is equal to 3, you will get g3 is equal to g9 and so on. That means what is the period of this particular function? What is the period of this particular function? Period of this particular function is 6. इस particular function का period क्या है? That is equal to 6. So this is an important type of question. You should remember this function also. सब remember करना possible नहीं है, but this is an important function क्योंकि CAT में कई बार ये repeat हुआ है. तो rather than solving this in long way, you should remember this, that gx plus 1 plus gx minus 1 is equal to gx. ठीक है, clear है सबको? Should we move to next question? इसको फंक्शन को नोट कर लेना अच्छे से, कॉपी पेन पे नोट कर लो, कोई एक कॉपी बना लो जहां इंपॉर्टेंट चीजें लिखते रहो. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन. ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. fx is equal to ax square. This is question CAT 2018. CAT 2008 sorry. 18 ax square plus bx plus c, where a, b, c are constant. A, b, c are constant. And a does not equal to 0. जब ये quadratic है, that means a should not be equal to 0. It is known that f5 is equal to minus 3f2. f5 is equal to minus 3f2 and 3 is a root of fx is equal to 0. 3 is the root of fx is equal to 0. Find other root. Options are minus 7, minus 4, 2, 6 and cannot be determined. Cannot be determined. Try this question. This is a CAT 2008 question. fx is given as ax square plus bx plus c, where a, b, c are constant and a should not be equal to 0. And f5 is given as minus 3f2 and 3 is the root of this particular equation. Find other root. You want to find value of other root. Try this question.
हेलो आपको मेल आया होगा, मेल आया होगा, उसको फॉलो करके एक्टिव कर दीजिए। हाँ बस वो भी आपको फिर वो इन्फॉर्म कर देंगे, चाहे मैच करने के लिए या फिर ठीक है। अनुष्का मतलब क्लासेस सही से अटेंड करते नहीं हो तुम लोग। मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद है? अलग से मैं लाइव हुआ था, देन मैंने इसका एक शॉर्ट मेथड डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ। ओके स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें डिस्कशन। ट्राई कर रहे हो, स्टार्ट करें डिस्कशन। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन। So fx is given as ax square plus bx plus c, where a, b, c are constant. Okay, and f5 is equal to minus 3 5 f2, and 3 is the root of this particular equation, and we want to find value of other root. हम लोगों को दूसरे root की value find करनी। Rather than solving this question by conventional approach, always try to represent this quadratic equation in factor form. Always try to represent this quadratic equation in factor form. अगर इसको हमेशा factor form में represent करोगे, then it will be easy to for you to solve this particular type of questions. जैसे let करो, जैसे let तुमने fx is equal to ax square plus bx plus c. We can write it as ax minus alpha x minus beta, where alpha and beta are roots of this particular equation. Alpha और beta क्या है इस equation के roots हैं, and this a highest coefficient जो होता है, जो highest power का जो coefficient होता है, that is known as leading coefficient. इस a को हम लोग leading coefficient कहते हैं। तो ax square plus bx plus c can be represented in its factor form. So we can represent it form of a x minus alpha x minus beta, where एक root की value given है तुम्हें, 3 is the root of this equation. That means let alpha is equal to 3. Alpha की value क्या given है? That is given as 3. And you want to find value of beta. ठीक है, beta की value find करने के लिए you have other equation. तुम्हारे पास दूसरी equation दी है, that f5 is equal to minus 3 f2. So f5 is nothing but a. You will replace x by 5, that is 5 minus 3 and 5 minus beta, which is equal to minus 3 f2. f2, that means you will replace x by 2. So 2 minus 3, 2 minus beta. Now this a and a will get cancelled out. This will be 2 into 5 minus beta is equal to 2 minus 3, that will be minus 1. Minus 1 into 3, 3. 3, 2 minus beta. So 10 minus 2 beta, that is equal to 6 minus 3 beta. So beta will be equal to minus 4, and that will be your answer. So rather than forming your equations के formation से कि to represent this in variable forms,
जस्ट कन्वर्ट दिस इन फैक्टर फॉर्म. अगर तुम फैक्टर फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चंस को कन्वर्ट करोगे, you will easily eliminate your number of variables and you can solve this question in 30 to 40 seconds. Otherwise it might get lengthy in some cases. हो सकता है इस केस में इजी हो जाए, but it might get lengthy in some other cases. तो बेटर रहता है कि always try to convert these quadratic equations in terms of factor equation. जैसे ही फैक्टर में कन्वर्ट करोगे, your a will get cancel out and you will get value of beta. Clear to everyone? You have to put equations, Akash. You have to put other. Oh, बार-बार तुम्हें recheck करना पड़ेगा. That's why it's better to solve by this equation method, this method only. Otherwise, you have to check 2 or 3 times. Yes, मैंने ये लाइव होके तुम लोगों को समझाया भी था. ध्यान ना दो तो क्या बताएं. Should we move to next question? ठीक है, question number 4. If roots of x cube minus ax square plus bx minus c equal to 0 are 3 consecutive integers. Find smallest possible value of b. Options are -1 by √3. Option B is -1. Option C is 0. Option D is 1 and option E is 1 by √3. Try this question. If roots of this particular equations are 3 consecutive integers, find the smallest possible value of p. p की smallest possible value find करनी है. स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. इफ रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. हम लोगों ने सेकंड क्लास में एक चीज सीखी थी ना कि जब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं दैट मींस दोस आर इन आल्सो इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 1. तीनों नंबर किसमें एपी में है विद कॉमन डिफरेंस 1. तो ऑलवेज जब भी कॉमन डिफरेंस 1 या 3 एपी में लेने या 5 लेने या 4 लेने, यू विल टेक दैट इन x - 1 x + 1 फॉर्म. एग्जैक्टली. सो लेट रूट्स आर 3 रूट्स है. रूट्स आर अल्फा -1, अल्फा एंड अल्फा + 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ 3 रूट्स. ठीक है, इट्स इजी टू सॉल्व इन दिस वे ना. अगर तुम अल्फा + 1 अल्फा + 2 ले लोगे दैट माइट गेट हेक्टिक इन सम केसेस. सो ऑलवेज बेटर टू टेक अल्फा -1 अल्फा एंड अल्फा + 1. अब हम लोगों से पूछा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ b. व्हाट इज b? b क्या है? दो के प्रोडक्ट का सम ना. दैट b इज इक्वल टू
alpha minus 1 into alpha plus alpha into alpha plus 1 plus alpha minus 1 into alpha plus 1. So if you will write it as alpha square minus alpha plus alpha square plus alpha square minus 1. So this will get cancelled out. So you will get 3 alpha square minus 1. So B is equal to 3 alpha square minus 1. So any square minimum value, you want to find minimum value of B. So any square minimum value will be 0. So 0 minus 1. So minimum value of B will be minus 1. That will be your answer. ज्यादातर लोगों का क्या है? Correct आया. This is clear to everyone. This is really important to represent this in alpha minus 1 alpha and alpha plus 1. That will go reduce your calculation part. Clear to everyone? रिस्पॉन्स करते रहो. क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 5. Now clear? Hello? Okay. Yes, okay. So your question is for 3 real x, y, z, x plus y plus z that is equal to 5. X plus y plus z की वैल्यू 5 है and x is xy plus yz plus zx is equal to 3. Find largest possible value of x. These are 4 options. This is CAT question, CAT 2006 question. Try this one. ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ट्राई करने से आएंगी. स्टार्ट करें डिस्कशन की हो रहा है सॉल्व.
ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ठीक है, and xy plus yz plus zx is equal to 3. There are many methods to tackle this question and this is really important for cat and zat perspective. cat के लिए भी these type of questions are important, for zat also. इस type के question कई बार zat में भी आते हैं। ठीक है, so we will start discussing different methods to tackle this question. Method 1, मेथड 1 क्या है? जैसे हम लोगों ने रेशनल फंक्शन को अगर रेशनल तुम्हें याद, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि x के टर्म में रिप्रेजेंट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करके देन वी कैन अप्लाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करके देन वी कैन अप्लाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम मेथड वी कैन अप्लाई हियर। सो b इज रॉन्ग, बेसिकली c इज द करेक्ट आंसर। तो 13/3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेथड 1। अगर तुम यहाँ पे देखो, यू कैन टेक y as common here, y into x plus zx that is equal to 3. Now what is the value of y? Y is equal to nothing but 5 minus x minus z. So you will replace that 5 minus x minus z into x plus z plus xz that is equal to 3. So that will be 5x plus 5z minus x square minus xz minus 5x plus 5z minus x square minus xz minus zx minus z square plus zx is equal to 3. Now this zx will be cancel out. ठीक है, if you will write it, that will be 5x plus 5z minus xz minus x square minus z square that is equal to 3. just solving करिए। ठीक है ना, जस्ट हम लोगों ने y को किससे रिप्लेस किया है? 5 minus x minus z से। 5 minus x minus z से रिप्लेस किया है and that will be x plus z is plus xz that is equal to 3. अब मल्टीप्लिकेशन क्या है? दैट इज 5x plus 5z minus x square minus xz minus xz minus z square plus xz that is equal to 3. Now xz and xz will be cancel out, so you have 5x plus 5z minus x square minus xz minus z square is equal to 3. So you can put here that x square z square plus z x minus 5 plus x यहाँ तक क्लियर? दिस इज वेरी लेंथी मेथड, बट अभी हम लोग और मेथड में आएंगे, दैट विल बी फेयरली इजी। यहाँ तक क्लियर है? मेथड क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? जस्ट रिप्रेजेंटेशन किया। अच्छा, अब हम लोगों को पता है कि z इज अ रियल वैल्यू। वी नो दैट z इज अ रियल वैल्यू। z कैसी वैल्यू है? दैट इज रियल। अगर z रियल है, दैट मीन d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो d की वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर z की रियल है, दैट मीन दिस इक्वेशन विल कंटेन टू रियल रूट्स, so d will be greater than equal to 0. When d is greater than equal to 0, that means x minus 5 square minus 4 x square minus 5x plus 3 that will be greater than equal to 0. So x square plus 25 minus 10x minus 4x square plus 20x minus 12 that will be greater than equal to 0. So minus 3x square plus 10x plus 13 that will be greater than equal to 0. अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखूं, that will be 3x square minus 10x minus 13 that will be less than equal to 0. So 3x square minus 13x plus 3x minus 13 that will be less than equal to 0. If you will take x as common, that is 3x minus 13. If you will take plus 1 common, that will be 3x minus 13 less than equal to 0. So that will be x plus 1 and 3x minus 13 that will be less than equal to 0. So this will be 13/3 and this will be minus 1. So it will vary from 13/3 to minus 1. So what will be maximum value of x? What will be maximum value of x? क्या होगी maximum value? That will be 13/3. And what will be minimum value of x? x की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? That will be minus 1.
So in this way you can solve this type of question. एक मेथड तुम्हारे पास ये हमेशा रहता है, एक मेथड, दिस इज बेसिक अप्रोच. ये इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अभी नहीं आ रहे हैं, अभी आर एस मेथड पे आ रहे हैं. नो, यू कैन नॉट पुट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y 0, x is equal to z is equal to 0, root 19 is not maximum value, 13/3 is your maximum value, root 19 is less than, that will not satisfy other equation. If you will put, थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे, if you will put x is equal to y, z is equal to 0, x and z is 0, this function will become 0, this value. If you will put x and z is equal to 0, the second equation will become 0. The second equation but 3 के इक्वल दी हुई, that means x and z is equal to 0 is a wrong method ना, वो तुम्हारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा दोनों इक्वेशन को. We have to find those values of x which will satisfy both equation. So your maximum value will be 13/3. So this is basic approach to solve this type of question. सिमरन जी, तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? अभी सक्षम आ रहे हैं, अभी आ रहे उस मेथड पे आ रहे हैं. अभी तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. तुम्हें x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. सो यू कैन टेक इन प्लेस x और y और z, किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू कैन रिप्रेजेंट इन y और यू कैन रिप्रेजेंट इन z आल्सो, है ना. y और z किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. दिस इज मेथड 1, वेरी बेसिक अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट श्योर शॉर्ट अप्रोच. यू कैन अप्लाई दिस मेथड इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स में आ जाती है इक्वेशन. सो ऑलवेज ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड अप्लाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे कन्वर्ट कर पा रहे हो तो दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल को क्वाड्रेटिक बना के दूसरी की रेंज हम लोग फाइंड कर सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लेट्स मूव टू नेक्स्ट अप्रोच. दिस अप्रोच इज क्लियर, मेथड 1 इज क्लियर टू एवरीवन. Please like or comment here that method 1 is clear, so we can proceed to method 2. Okay, let's move to method 2. Method 2 we can also apply Cauchy theorem here. What is Cauchy theorem? Cauchy theorem का यूज कैसे कर सकते हैं? We know that x plus y plus z is equal to 5. ठीक है, and xy plus yz plus zx is given as 3. So represent this in x plus y plus z whole square is nothing but x square plus y square plus z square plus 2 times of xy plus yz plus zx. Now x plus y plus z is given as 5, so it will become 25. 25 is equal to x square plus y square plus z square plus 2 into 3, that will be 6. So x square plus y square plus z square is equal to 19. X square plus y square plus z square is equal to 19, and we have also one equation that x plus y plus z is equal to 5. Now you can apply Cauchy theorem. Cauchy theorem क्या होता है बेटा? कि जैसे मान लो कोई भी तुम्हारे पास 4 नंबर दिए, लेट करो 1 2 3 4, लेट हैव एनी 4 नंबर्स 1 2 3 4, जिनको Cauchy का आइडिया नहीं है उनके लिए, ठीक है. 1 2 3 4 4 नंबर्स. You can take any two pairs. Let 1 into 3 plus 2 into 4 whole square. कोई भी दो पेयर पिक कर सकते हो तुम, कोई भी पेयर 1 और 3 का पेयर, 1 4 1 2 2 3 4 3, कोई भी पेयर पिक कर सकते हो. 1 into 3 plus 2 into 4 whole square, that will always less than equal to 1 square. One pair from here 1 square plus any one from here 2 square into 3 square plus 4 square. So this is known as Cauchy theorem basically. Same. You can take any pairs, कोई भी दो पेयर ले सकते हो. जैसे लेट करो तुम्हारे पास अगर in terms of this a1 a2 b1 b2 and you want to apply Cauchy theorem here, so that will be a1 into let b2 plus a2 into b1 whole square, that will be less than equal to a1 square plus a2 square into b1 square plus b2 square. According to questions you can vary these variables. तुम इन variables को अपने according ले सकते हो. This is known as Cauchy theorem. इस चीज को Cauchy theorem कहते हैं. ठीक है, तुम इसको Cauchy theorem को एक मैं वीडियो भी बना दूंगा Cauchy theorem का तुम लोगों के लिए डिटेल्स में, तो जिनको आइडिया ना हो वो एक बार उससे भी देख सकते हैं. बस बेसिक यही है Cauchy theorem का कि हम लोग यहाँ पे दो का एक पेयर लेके अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो Cauchy theorem यहाँ कैसे यूज करते हैं. You want to maximize the value of x. You want to maximize, or we can say that you want to minimize the value of x. Maximize or minimize.
So you can take other two variables here and can apply Cauchy. That means if you will take y into 1 plus z into 1 whole square, that will be less than equal to y square plus z square into 1 square plus 1 square. This step is clear to everyone. This particular step is clear to everyone. We can y into 1 plus z into 1 whole square less than equal to y square plus z square 1 square plus 2. Why 1? Because we know the value of y plus z. We know the value of y plus z. We know the value of y square plus z square. If you will take another, you can take any variables you want. You can take any variables you want. You can take 2, 3. You can take 4, 5. But if you will take y into 4, y into 4 plus z into 5, tell me you know the value of 4y plus yz. You know this value 4y plus 5z. You know this value? No, you don't know this value. You know y plus z only. You know y plus z value. That's why you are taking this one value to apply Cauchy theorem. So y into 1 plus z into 1 whole square, that will be less than equal to y square plus z square into 1 square plus 1 square. Now y plus z. अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर तुम्हें x में कोई रेंज मिल जाए, x में कोई रेंज x में कोई क्वाड्रेटिक मिल जाए, you can find range of x or not? अगर तुम्हें x में कोई क्वाड्रेटिक मिल जाए, you can find range of x or not? Yes, you can find range of x. That is our motto to solve this particular question. Y plus z. What is y plus z in terms of x? What is value of y plus z in terms of x? That is 5 minus x whole square. 5 minus x whole square less than equal to, what is y square plus z square? That is 19 minus x square into 2. So 25 plus x square minus 10x less than equal to 38 minus 2x square. So 3x square minus 10x minus 13, that is less than equal to 0. So x की जो maximum value आ जाएगी, that will be equal to 13 by 3. That is clear. This method is clear to everyone. This approach is clear to everyone. Okay. Should we move to next method to solve this question? Next method में move करें solve करने के इस question को. जितने approach पता होंगे your जल्दी क्या तुम लोग जल्दी की तरह मत रटो यार. जल्दी क्या है, प्लेट करो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 है, ये 6 नंबर तुम्हें दिए हुए हैं. So you can take a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 whole square, that will be less than equal to a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square. This is known as Cauchy theorem. ठीक है, ये Cauchy theorem हो गई तुम्हारे पास. ठीक है, let's move to method 3 to solve this question. Method 3 again basic approach है. Method 3 भी अगर तुम्हारा basic knowledge ठीक है तो you can apply method 3. मेथड 3 क्या है कि जैसे x को हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है, x को मैक्सिमाइज करना है. अच्छा, एक पार्ट को मैक्सिमाइज करना है, बाकी पार्ट कैसा होना चाहिए? अदर पार्ट, दूसरे पार्ट कैसे होने चाहिए? वन पार्ट शुड बी मैक्सिमाइज, दैट मींस द अदर काउंटर पार्ट शुड बी मिनिमाइज्ड. काउंटर पार्ट शुड बी मिनिमाइज्ड. जैसे y plus z वाला कोई फिक्स वैल्यू होगी, y plus z की कोई फिक्स वैल्यू होगी, that should be minimized. उस वैल्यू को हम लोगों को मिनिमाइज करना है. अच्छा, कब मिनिमाइज होगी? कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिनिमाइज कब होगी? y plus z is equal to 5. मिनिमाइज कब होगी? When those two values should be equal or not? At equality that will be minimized or maximized, है ना? At equality जब हम लोग am gm लगाते हैं तो am equal to gm कब होता है? जब वैल्यूज आपस में क्या होती है? इक्वल होती है ना? वैल्यू आपस में इक्वल होती है. That means tell me when y is equal to z, when y is equal to z, then x will be maximized or not? When y is equal to z, then x will be maximized or not? Yes, x will be maximized. So to find the maximum value of x, that y should be equal to z. That y should be equal to z. So it will become x plus 2y is equal to 5. And when you will put y is equal to z, that value will change into x into y plus y square plus xy.
is equal to 3. So 2xy plus y square is equal to 3. Now, what is the value of y here? Y is equal to nothing but 5 minus x by 2. Y is, from first equation, y is equal to 5 minus x by 2, and you can replace here 2x, 5 minus x by 2 plus 5 minus x by 2 whole square is equal to 3. Now, this will be, this 2 cancel out, 5x minus x square plus 25 plus x square minus 10x divided by 4 is equal to 3. So that will be 20x minus 4x square plus 25 plus x square minus 10x is equal to 12. So that will be minus 3x square plus 10x minus 13 is equal to 0. So 3x square minus 10x plus 13 is equal to 0. So x is equal to 13 by 3, and that will be your maximum value. Clear to everyone? Clear? So there are many methods to tackle these type of questions. There are many methods to tackle these type of question. You can apply that d greater than equal to 0 method. Y is equal to z equal to, बेटा x को अगर तुम्हें मैक्सिमाइज करना है तो दिस पार्ट शुड बी मिनिमाइज्ड, y प्लस z शुड बी मिनिमाइज्ड. अब सोचो जरा, जैसे लेट करो y प्लस z की वैल्यू, एक सेकंड वेट करो. No, you cannot extend these approaches in case of integers. Naveen, you can get close to that particular value. You can get close to that particular value कि हाँ ये इसके close होनी चाहिए, तो minimum और maximum के लिए it should be close to as possible. जैसे मान लो कि अगर x into y is equal to 20 दिया हुआ है, अब तुम root 20 पे आओगे तो root 20 मतलब approximately 4 point something आएगा ना. x को maximize ही तो करना है ना, x को तुम्हें maximize करना है, x को maximize करना है, that means y plus z should be minimized. लेट करो y plus z की वैल्यू जैसे 4 है, y plus z की वैल्यू 4 है और तुम्हें y into z की वैल्यू समथिंग है, y into z की वैल्यू लेट करो 4 and you want to minimize y plus z basically, तो y plus z by 2 is greater than equal to yz to the power 1 by 2. मिनिमम कब होगा? जब y is equal to z होगा ना, at equality that will get minimum or maximum value. So जब x को मैक्सिमाइज करेंगे the other part should be equal, जो दूसरे दोनों पार्ट होने चाहिए that should be equal only. ठीक है? Should we move to next question? एक और अप्रोच है इसका, बट वो ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच हो जाएगा. Again same method. Yes, you will get two values from this method ना, you will get two methods. हाँ वो मैक्स के, अगर x को तुम्हें मिनिमाइज निकालना होता अदर वैल्यू शुड बी मैक्सिमाइज, और तभी तुम इक्वालिटी रखते हो. यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x ना, वन विल बी मैक्सिमम एंड अदर वैल्यू विल गिव यू मिनिमम. एक वैल्यू तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू देगी, एक वैल्यू तुम्हें मिनिमम वैल्यू देगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे क्वेश्चन? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6. Question number 6. Question number 6 is if A and B belong to set 1, 2, 3, 4, then number of equations ax square plus bx plus 1 equal to 0 having real roots. ठीक है, कैट 2006 का क्वेश्चन है, कैट 2006. Now question number 6, if A and B belong to this particular set, that means A और B की जो values है वो 1, 2, 3, 4 में possible है, and we want to find number of possible equations ax square plus bx plus 0, number of कितनी ऐसी equation होंगी having real roots इस equation के. try करो. options दे देता हूँ. ठीक है, तो options दिए हुए हैं तो 10,
7 6 12. Try this question. You will get these type of question in CAT. मतलब CAT में इस type के questions काफी आते हैं. This is fairly easy question, but important type of questions for CAT. जहाँ पर mistake होने के छोटे-छोटे point पे mistake होने के कभी-कभी chances हो जाते हैं. तो this is an easy but important question for CAT. ये तुम्हें type के आने चाहिए question कि how to approach these type of questions ना. इस type का आना चाहिए तुम्हें. ठीक. जैसे let करो कि if A and B belong to this particular set. The number of equation have ax square plus bx plus 1 having real roots. Real roots, that means d will be greater than equal to 0. If d is greater than equal to 0, then it will contain real roots. D is greater than equal to 0, that means b square minus 4a, that should be greater than equal to 0. That means b square should be greater than equal to 4a. It should satisfy this, है ना? b और a के बीच में ये relation होना चाहिए, है ना. B और A this should satisfy this particular relation. अब तुम एक एक वैल्यू उठाने लगो. फर्स्ट वैल्यू लेट करो A को तुमने 1 रखा, तो B square should greater than equal to 4. B square should greater than equal to 4. So what are the possible values of B? B is equal to 2, 3 and 4. These are possible values of B. क्योंकि B की वैल्यू 1 रखोगे, it will be 1, which is not greater than equal to 4. You will start B equal to 2, 3 and 4. Then you will put A is equal to 2. When you will put A is equal to 2, you will get B square is greater than equal to 8. Now which values of B will satisfy here? B is equal to 3 and 4 will satisfy. Because when B is equal to 1 put karoge, that will be 1, which is not greater than equal to 8. Then you will put B is equal to 2, which is not greater than equal to 8. Then you will put B is equal to 3. Yes, it's greater than 8. Then you will put B is equal to 4. Yes, it's greater than 8. Then you will move to A is equal to 3 part. When A is equal to 3, B square will be greater than equal to 12. B square is greater than equal to 12, so B is equal to 4 will satisfy. केवल B is equal to क्या satisfy करेगा? 4 satisfy करेगा. Then you will move to A is equal to 4. When A is equal to 4, so B square is greater than equal to 4 into 4, 16. So which value of B satisfy? B is equal to 4 will satisfy. That means how many pairs of A and B will be there? 3 plus 2 plus 1 plus 1. That means 7 values will be there. 7 pairs of A and B will be there. That means 7 equations are possible. Clear to everyone? Clear? बेटा कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो ऑलवेज फॉर्मेशन वे में करो, अदरवाइज यू माइट मिस सम वैल्यूज. चांसेस रहते हैं कि स्टूडेंट के सिली मिस्टेक हो जाए, है ना. तो बेटर रहता है कि एक एक फॉर्म में लिखो. इट माइट टेक 10 एक्स्ट्रा सेकंड्स. यस, इट कैन बी न्यूमेरिकल. किसने कहा बेटा यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहाँ लिखा है कि ए और बी 4 नहीं हो सकते? क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहाँ लिखा है? अगर नहीं मेंशन है, अपने आप से कुछ भी इमेजिन मत करो. जितनी इक्वेशन को दी होती है इंफॉर्मेशन, जस्ट उसी को मानोगे ना. कि ए और बी बिलोंग टू दिस सेट, मतलब ए की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, बी की वैल्यू भी 1 2 3 4 हो सकती है. ये बी और ए दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, नॉन इक्वल वैल्यूज भी हो सकती है. दोनों पॉसिबिलिटीज है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें. क्वेश्चन नंबर 7.
7. Question number 7 is 3 positive real numbers x, y and z, 3 positive real number x, y, z such that y minus x is equal to z minus y and x, y, z is equal to 4. Find minimum possible value of y. Option A is 2 to the power 1 by 3. Option B is 2 to the power 2 by 3. Option C is 2 to the power 3 by 4. Option D is 2 to the power 3 by 4. ये काफी बार किया होगा तुम लोगों ने, क्वेश्चन स्टिल पता होना चाहिए, ट्राई करो. 3 positive real number x, y, z such that y minus x is equal to z minus y and x, y, z is equal to 4. Find minimum possible value of y. Find. अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है. अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट इज, अगर 3 नंबर जैसे यहां पर तुम्हारे दिए हुए हैं, दिस इज 2y is equal to x plus z, मतलब y minus x is equal to z minus y, that means x y z में x y z these are in AP ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन हो रहा है. अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, you can take one value is alpha minus d, other value is alpha and other value is alpha plus d. These are 3 values na, alpha minus d, alpha and alpha plus d. Now you can apply am as am greater than gm, that means alpha minus d plus alpha plus d divided by 3, that is greater than equal to alpha minus d into alpha plus d to the power 1 by 3. Now alpha minus d is nothing but x into y into z, value of which is given, so 4 to the power 1 by 3. This value will get cancelled out, so this is 3 alpha by 3, which is alpha. Alpha is greater than equal to 4 to the power 1 by 3. Alpha is nothing but your y, so y is greater than equal to 4 to the power 1 by 3, which is nothing but 2 to the power 2 by 3, and that will be your answer. तुम्हारा क्या हो गया, आंसर निकला है. क्लियर है? क्लियर? है ना. अगर तुम्हें ये चीज ना भी समझ में आई, एमजीएम कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में ना भी आ रहा हो इन एग्जाम कंडीशन, देन यू हैव अल्टरनेटिव मेथड्स आल्सो ना. बाकी मेथड भी है तुम्हारे पास, यू कैन अप्लाई दोस मेथड्स आल्सो. अभी जैसे मैंने बताया कि अगर 2 इक्वेशंस हैं, इफ यू हैव 2 इक्वेशंस, तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई है ना, 2 इक्वेशंस दी हुई है तुम्हारे पास, ठीक है. कौन सा मेथड लगा सकते हो? Which method you can apply? Yes, you can solve directly also. Which method you can apply? That d greater than equal to 0 method or not?
that d greater than equal to 0 method, yes you that option is available for you ना. अगर इन केस तुम्हें एमजीएम ना स्ट्राइक करे इन एग्जाम कंडीशन, तभी बेटर होता है कि ऑलवेज किसी पर्टिकुलर जो इस इनिशियल स्टेज होती है सीखने की, उस समय मेथड्स तुम्हारे पास एक्सपोजर ज्यादा मेथड का हो। इन एग्जाम इन केस एग्जाम कंडीशन में कभी-कभी स्ट्राइक नहीं करता है, क्योंकि अगर तुम्हारा आरडीआई टफ बन गया तब इजी क्वेश्चन भी मे बी स्ट्राइक ना करे इन प्रेशर ना, तो बेटर रहता है कि ज्यादा मेथड का एक्सपोजर हो एंड यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन कि हाँ अभी मेरे पास एमजीएम दिमाग में नहीं आया, एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि मैं रिप्लेस करके वी कैन अप्लाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ठीक है, एक ये मेथड तुम्हारे पास रहना चाहिए हमेशा। क्लियर है बेटा सबको ये? एक सेकंड क्वेश्चन देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, वन बाई 3 log base 3m plus 3 log base 3n that is equal to 1 plus log base 0.00085. Option A is m to the power 9 is equal to 9 by n by 9. Option B is n to the power 9 is equal to 9 by m. Option C is m cube is equal to 3 by n. And option D is n to the power 9 is equal to 3 by m. Try this question. First term is 1 by 3 log base 3m plus 3 log base 3n is equal to 1 plus this log base 0.0085. 0.0008, 3 zeros हैं, 3 zeros जय।
Yes, it should be 0.008, but गलत दिया हुआ बुक में 0.0008 दिया हुआ. It should be 0.008. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज easy to start ना, ये सॉल्विंग हम लोग कर सकते हैं. We can solve this particular thing. That is 1 plus log 5 divided by log 0.008. So this is log. जिसको अगर बेसिक ना पता हो तो ऐसे मेथड से सॉल्व कर सकता है. डायरेक्टली भी उसको लिख सकते हैं. log 10/2 divided by log 8/1000. So this is 1 plus log 10 minus log 2 divided by log 8 minus log 1000. Okay, so that is 1 plus 1 minus log 2 divided by 3 log 2 minus log 1000, that is equal to 3. So this is 1 plus 1 minus log 2 divided by 3 minus 3 अगर कॉमन है ना, it will be 1 minus log 2. This will be cancelled. So 1 minus 1/3, that is equal to 2/3. So your LHS should also be equal to 2/3. LHS की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए? 2/3 के इक्वल होनी चाहिए. So now you can solve this question, or you can also use help from options. Options की हेल्प से भी कर सकते हो. Otherwise you can solve this. Solving के लिए now अगर हम लोग इसको देखें, this will be log base 3 m to the power 1/3 plus log base 3 n to the power 3. That is nothing but log base 3 m to the power 1/3 into n to the power 3. That is equal to 2/3. So that will be m to the power 1/3 into n to the power 3. That is equal to 3 to the power 2/3. That means n to the power 9 will be equal to 9/m. This will be your answer. Clear है बेटा? मेथड क्लियर है? एक चीज और इधर देख सकते हो, थोड़ा छोटे के लिए देखो जरा चीज, कि यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो, यू आर गेटिंग log 1/3 n to the power 3. You are getting log 1/3 n to the power 3. तो अगर तुम इस चीज को ना भी सॉल्व कर रहे हो, अगर तुम इस चीज को ना भी सॉल्व करते इस पर्टिकुलर चीज को, तब भी तुम क्या देखते कि यू आर गेटिंग log m to the power 1/3 n to the power 3. That means m to the power 1/3 और n क्यूब में कोई रिलेशन है. There is a relation between m to the power 1/3 and n cube. अब इसका जब क्यूब करोगे, there is a relation between m and n to the power 9. जब इसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को क्यूब करोगे, you will get m into n to the power 9. That means there is a relation between m and n to the power 9. That means what will be your answer? Answer will be B part. That means only one value is here where relation between m and n to the power 9 is given. ठीक है, m और हाँ, ये दोनों में कोई एक ऑप्शन हो सकता है. Then you can solve and can find your values. ठीक है. अब थोड़ा सा ध्यान देना, अभी जैसे दिया हुआ है B और D में m और n to the power 9 है. कई केसेस ऐसे आएंगे जहाँ पर B और D में शायद n to the power 9 और m में ना दिया हो रिलेशन, सिर्फ एक ही में रिलेशन दिया हो. तो you can directly mark that thing. ठीक है, थोड़ा सा ये भी चीजें ध्यान में रखना कि किस चीज में रिलेशन. 2017 में कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो वी कैन सॉल्व दैट डायरेक्टली आल्सो, इनको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, शुड वी मूव टू कैट 2017 क्वेश्चंस? कैट 2017 क्वेश्चन में मूव करें. पहले फर्स्ट स्लॉट ओवर करें कि सेकंड स्लॉट? पहले फर्स्ट स्लॉट ओवर कर देंगे, सेकंड स्लॉट ओवर कर देंगे? फर्स्ट ओवर कर. कैट 2017
ठीक है, सेकंड स्लॉट कैट 2017 सेकंड स्लॉट ही कर देंगे, मैंने कराया भी हुआ है काफी चीजें इसके। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैट 2017 सेकंड स्लॉट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट भी कवर करेंगे, अब आज तो थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, मेरी और भी क्लास है, बाद में करेंगे। सेकंड स्लॉट के देखते हैं जितने 2 3 4 5 जितने क्वेश्चन अभी कवर करते हैं। बाकी जितना अभी तक हुआ उतना क्लियर है, जितना अभी तक हुआ है दैट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ x is real number such that log base 35 is equal to log base 5 2 plus x, which of the following is true? Which of the following is true? ठीक है, ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, ट्राई दिस। This is first question of CAT 2017 second slot. You can share this link with your friends also. They can go through the solutions of CAT 2017 second slot. बेटा ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करो ना तो प्लीज इस तरह से सॉल्व करो कि तुम ओरिजिनली सॉल्व कर रहे हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। वो थोड़ा सा ढीलापन से सॉल्व मत किया करो, अदरवाइज दैट विल क्रिएट बैड हैबिट फॉर यू ना। वो एक हैबिट बन जाती है सिली मिस्टेक्स की। तो कोई सॉल्व करो, वैसे सॉल्व करो कि एग्जाम कंडीशंस में ही सॉल्व हो रहा है तुम्हारा। You will get idea of level of CAT 2017 also कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे तुम्हारे पास क्वांट सेक्शन में भी। ठीक है, फेयरली इजी क्वेश्चंस थे बट ऑप्शंस बहुत अच्छे रखे हुए थे उन्होंने। अब इस क्वेश्चन में नहीं, आगे जब बाकी क्वेश्चंस अगर CAT 2017 के लगाओगे तो ऑप्शंस का जो फॉर्मेशन था दैट वाज गुड, बट सेट क्वेश्चंस इजी थे। बेसिक अगर ठीक है ना, बेसिक अगर ठीक है तो दैट मींस वो क्वेश्चन वाज फेयरली इजी। जस्ट तुम्हें ये करना था कि तुम्हें ऑप्शन सही से ट्राई करने थे। सिली मिस्टेक्स के हाई चांसेस थे तुम्हारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ठीक है, कंसंट्रेट करो log 35 पे। log 35 इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। log 3 that is equal to 1 and log 3 square, that means log 3 9 that is equal to 2. that means log 3 5 की जो वैल्यू होगी that will vary from 1 to 2. log 3 5 की जो वैल्यू होगी that will vary from 1 to 2, मतलब 1 से बड़ी होगी, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ठीक है ना, यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। log base 5 2 plus x, log base 5 2 plus x जो है this should also vary from 1 to 2. log base 5 2 plus x this should also vary from 1 to 2 because अगर तुम्हारा LHS 1 से 2 के बीच में वैरी कर रहा है that means RHS should also vary from 1 to 2. अब इसी को जो बेसिक हम लोग सॉल्व करते हैं, this will be 5 to the power 1 2 plus x
and 5 to the power 2. That means 2 plus x will vary from 5 to the power 1 to 5 to the power 2. That means 2 plus x will vary from 5 to 25. So x will vary from 3 to 23, and that will be your answer. So answer कितना आएगा? Answer will be D part. क्योंकि log 3 5 वैरी कहां से कहां तक कर रहा है? इज वैरिंग फ्रॉम 1 to 2. अगर log 3 5 1 से 2 के बीच में वैरी कर रहा है, दैट मींस log base 5 2 plus x will also vary from 1 to 2. So x will vary from 3 to 23. You can also take help from options. अच्छा, this method is clear to everyone? This method is clear to everyone? Yes, it is a definite value. वो रेंज दे रहा है कि इसके बीच में कोई एक वैल्यू होगी उसकी, that is definite, 100% that is definite value. बट इसके बीच में कोई एक रेंज होगी ना, उसकी कोई एक रेंज होगी, वो एक रेंज दिया है पर्टिकुलर, इसी के बीच में वैल्यू लाई करेगी. ठीक है, that is the main thing. You can also solve this question with help of options, है ना? ऑप्शंस के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे. जैसे मान लो कि अगर ये log 3 5 है, log 3 5 that is greater than 1. We know that this value is greater than 1 and less than 2. Now you can start from option A. X की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है. अगर तुमने x is equal to 1 पुट किया, x is equal to 1 पुट किया, that is log 5 3 which is less than 1. So it is out of picture. This option is out of picture. Then you will move to second option, 23 to 30. 23 to 30 you can take x is equal to 25. जब तुमने x is equal to 25 ले लिया, लेट करो, तो log 5 27, log 5 27 which is greater than 2. Again this option is out of picture. अब x is greater than 30, you can take 100 200 300 any value. So this option is also out of picture. So option A B C are out of picture, so answer will be D. So you can also solve this question by options elimination. ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से भी एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और आंसर फाइंड कर सकते हो. क्लियर है बेटा? हाँ रजत, अगर बेटा जैसे एलएचएस की वैल्यू अगर लगो 5 है, मैं कह दूं एलएचएस इज इक्वल टू 5, तो आरएचएस भी तो 5 होगा ना. अगर एलएचएस 2 है तो आरएचएस भी 2 होगा. अगर एलएचएस 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, दैट मींस आरएचएस विल आल्सो लाई बिटवीन 1 to 2, है ना? दैट इज अ रेंज पार्ट. वो तो हमेशा एलएचएस और आरएचएस की सेम प्रॉपर्टीज वर्क करेंगे. आरएचएस की जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी प्रॉपर्टी ऑफ आरएचएस आल्सो. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में मूव करें बेटा. Find minimum possible value of sum of squares of roots of x square plus a plus 3x minus a plus 5 is equal to 0. Options are 1, 2, 3 and 4. We have already discussed these type of questions in CAT. We have already discussed these type of questions in CAT. फिर भी अच्छा लगता है ना बेटा, अब अपनी कुछ चीज होगी तो लिखने में मजा आता है ना. So find minimum possible value of sum of squares of root of x square plus a plus 3x minus a plus 5 is equal to 0. We have already discussed these type of questions. We have CAT 2005 में भी एक इस type of question आ चुका है. This is easy but important type of questions for CAT. CAT में आया हुआ 2017 second slot का, but also an important question for CAT 2018 sorry.
स्टार्ट करते डिस्कशन की फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट. दिस इज इजी बट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर कैट. लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. Let roots are alpha and beta. And what is sum of roots? Sum of root is equal to minus of a plus 3. This is sum of root. And what is product of roots? Product of root is equal to minus a plus 5. This is product of roots. And we want minimum value of alpha square plus beta square. We want minimum value of this alpha square plus beta square. So we can represent alpha square plus beta square in form of alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. And what is alpha plus beta? That is minus a plus 3 whole square, which will become a plus 3 whole square also. Because minus 1 whole square, that will change into plus 1. Minus 2 alpha beta. Alpha beta, that is minus a minus 5. So this is a square plus 9 plus 6a plus 2a plus 10. That is a square plus 8a plus 19. ठीक है, a square plus 8a plus 19, which is nothing but a plus कितना आ रहा है वैल्यू, कहाँ गया क्वेश्चन, a plus 4 whole square plus 3. अब हम लोगों को इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी. वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 0. 0 plus 3, दैट मींस मिनिमम वैल्यू विल बी 3. मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी. ठीक है. Otherwise there are many approach to find minimum value of this particular function. You can differentiate it. Differentiate करोगे, you will get 2a plus 8 is equal to 0. So a is equal to minus 4 will give you minimum value. If you will put minus 4 here, you will get 3. Or we can also say no, बेटा तो am greater than equal to gm. Yes, minus d by 4a से भी निकाल सकते हो. You can also find minimum value by minus d by 4a. Vikramjit, am greater than equal to gm is valid when both numbers are positive real. ये कई बार मैं चीख के बता चुका हूँ कि am gm तभी अप्लाई कर सकते हो when both values should be positive real. Otherwise you cannot apply am greater than equal to gm. This is valid. Question 2 is clear to everyone. सौरभ एक बार बेटा उसमें देख लेना, फिर से एक बार रिकॉर्डिंग फिर से इसकी देख लेना और गो थ्रू करके फास्ट रिकॉर्डिंग में देख लेना. यू विल गेट क्लियर आइडिया. Question 3. An infinite GP has term A1, A2, A3 and so on. An is equal to 3 times of an plus 1 plus an plus 2 dot infinity. For every n greater than equal to 1, if a1 plus a2 plus a3 dot infinity is equal to 32, find a5. Option A is 1 by 32, option B is 2 by 32, option C is 3 by 32, option D is 4 by 32. ठीक है. Question is an infinite GP is given such that an is equal to, that means nth term will be equal to 3 times of an plus 1 plus an plus 2 and so on. आए हुए थे infinite GP पे, that is an important part for cat. इस पे infinite GP है, that is an important part. ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लो फिर डिस्कशन करते हैं.
A5 की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, A5। ठीक है, स्टार्ट करते डिस्कशन। An infinite GP A1, A2, A3, A4 and so on, and for every n greater than equal to 1, let n is equal to 1, that A1 is equal to 3 times of A2 plus A3 plus A4 and dot 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 infinity. This is the condition given. Or we can also say that A2 is equal to 3 times of A3 plus A4 and so on. This is the condition given here. ठीक है, for every n greater than equal to 1, that means you can take n equal to 1, 2, 3 and so on. So A1, जैसे हम लोग A1 A2 लेट करते हैं तो लेट करो A1 is equal to A है, A2 क्या होता है, that will be AR, A3 क्या होता है ज्योमेट्रिकल में AR स्क्वायर, A4 क्या होता है, that will be AR cube and so on. Now this is the condition, A1 AR square, AR cube and so on. So A1 is equal to A is equal to 3 times of AR plus AR square plus AR cube dot 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 infinity. So A is equal to 3 times of infinite GP का सम का फॉर्मूला क्या होता है, S infinity is equal to A divided by 1 minus R. This is summation of infinite GP. So that will be AR divided by 1 minus R. So A and A will be cancelled out because A should be a positive value, no? So that will be 3R is equal to 1 minus R. So R will be equal to 1 by 4. So R की वैल्यू हमारे पास आ गई, R is equal to 1 by 4 आ गया। अब हम लोगों को A की वैल्यू और फाइंड करनी है ना, we have to find value of A। A की वैल्यू के लिए कौन सी कंडीशन दी हुई है, this is the condition for value of A। This is nothing but A divided by 1 minus R। Infinite GP का सम जो दिया that is equal to 32। अब तुम्हारे पास R 1 by 4 है, so A divided by 1 minus 1 by 4 that is equal to 3 by 4 is equal to 32। So that means A is equal to 24। A की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अगर A की वैल्यू 24 आ गई तो हम लोगों को अब निकालना क्या, A कितना है 24 into 1 by 4 into 4 into 4 into 4 that will be 6, 2 that means 3 divided by 30, that will be your answer। So fairly easy question, straightforward one, but एग्जाम कंडीशंस में ऐसा होता है कभी कभी स्ट्राइक नहीं करता कि ये चीज क्या होगी, तो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय बेसिक मेथड आल्सो। क्लियर है बेटा सबको, क्लियर है? जल्दी बोलो, दिस इज क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बुक करते हैं, क्वेश्चन 4। Question 4 is based on the same concept, CAT 2017 second slot. If A1, A2, A3, A5, A4 and A5, A1, A2, A3, A4 and A5 sequence of 5 consecutive odd numbers, these are 5 consecutive odd numbers, ये पांचों कैसे हैं, consecutive odd numbers है। Consider a new sequence of consecutive even numbers ending with 2A3. Consider a new sequence of consecutive even numbers ending with 2A3 if sum of the numbers in the new sequence is 450, find A5। Try it।
A1 A2 A3 A4 A5 5 consecutive odd numbers दिए हुए हैं, ठीक है. Consider a new sequence of consecutive even numbers ending with 2 A3. If sum of the numbers in the new sequence is 450, find value of A5. A5 की वैल्यू फाइंड करेंगे. Yes, new sequence is given ना. Consider a new sequence of consecutive even number ending with 2a3. Ending with 2a3 है तुम्हारे पास. Just this information is given. Ending कहाँ से हो रही है? 2a3 तक हो रही है ना. 5 consecutive numbers है. 5 consecutive numbers, ठीक है. So 2a3 से इसकी एंडिंग हो रही. There are many methods to tackle this question ना. तुम लोग ने भी कर लिया आराम से. There are many methods to tackle this question. तुम लोग फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हो, ऑड नंबर से, और सम ऑफ नंबर्स इन द न्यू सीक्वेंस से स्टार्ट कर सकते हो. जैसे 2a3 से एंड हो रहा है. 2a3 से एंड हो रहा है व्हिच इज एन इवन नंबर. न्यू सीरीज की अगर मैं बात करूं, 2a3 से एंड हो रहा है. अच्छा, उससे पहले क्या नंबर रहा होगा? That be 2a3 minus 2 or not. उससे पहले क्या रहा होगा? 2a3 minus 4 रहा होगा. उससे पहले क्या रहा होगा? That will be 2a3 minus 6 रहा होगा. उससे पहले क्या रहा होगा? 2a3 minus 8 रहा होगा. जैसे ये नंबर अगर लेट करो 10 है, तो ये नंबर 10 minus 6 रहा होगा. ये नंबर 4 रहा होगा. 3 ऐसे रहे होंगे. अब इन सब का सम कितना दिया होगा? सम ऑफ these 5 numbers that is given as 450, है ना. तो that will be 10a3 minus that will be 20 is equal to 450. So that will be 10a3 is equal to 470. So a3 की वैल्यू कितनी आ गई? 47. a3 कितना आ गया? 47. तुम्हारा a3 निकल आया 47. a3 47 में नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 49. नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 51. So a5 will be 51. So there are many methods to tackle this question. You can also take help from that last number is 2a3. तो उससे पहले क्या रहा होगा? 2a3 minus 2, 2a3 minus 4, 2a3 minus 6, minus 8. Sum of this is given 450. So you can find value of a3 which is 47, which is an odd number. So next odd number 49, next odd number 51. Clear beta? Clear to everyone? ओके, आज का सेशन यही ओवर करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट सेशन किसी दिन और रखेंगे, उसमें पूरे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड स्लॉट के खत्म कर देंगे. जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस है वो ओवर करेंगे. देन वी विल मूव टू हाउ डिड यू फाइंड आउट सीक्वेंस. हाउ डिड यू फाइंड आउट सीक्वेंस? बेटा देखो, पहले 2a3 था. ऐसे लेट करो a3 की वैल्यू 10 है.
A3 की वैल्यू 10 है, 20 एक नंबर है, उससे पहले क्या इवन नंबर होगा, 18 रहा होगा ना, 2A3 लास्ट नंबर है ना, तो 20 से पहले 18 रहा होगा, फिर 16, फिर 14, फिर 10, 5 नंबर से इतने रहे होंगे, 5 नंबर। अब 2A3 लास्ट नंबर किससे ओवर हो रहा है, 2A3 से ओवर हो रहा है, तो उससे पहले क्या होगा, 2A3 -2 -4 -6 एंड -8, तो ये 5 नंबर है ना, 5 नंबर का सम दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेस क्लास। ये क्लास आज ओवर करते हैं, फिर जब नेक्स्ट किसी दिन और रखेंगे देन वी विल डिस्कस ऑल सेकंड एंड थर्ड स्लॉट। नहीं, पीडीएफ कुछ नहीं मिलेगा बेटा, देयर इज नो पीडीएफ, पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन गूगल, यू कैन डायरेक्टली फाइंड दैट। ठीक है, गूगल एक अच्छी चीज है, वहां से फाइंड कर सकते हो पीडीएफ, है ना, तो वहां से मिल जाएंगे क्वेश्चंस तो मैं कैट में आया हूं। ठीक, तो फिर नेक्स्ट एक सेशन किसी दिन रख के ये कवर कर देंगे। ठीक है, चलो प्लीज इसको अगर तुम लोग ठीक है वो शेयर और सब्सक्राइब कर देना थोड़ा बहुत, तो यार थोड़ा चलो ठीक है, समझ ही गए होगे, है ना, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा फ्रेंड रैंक को जो कर रहे हो एक्टिवेशन, ग्रुप पे ऐड करते रहा करो। ठीक है, ग्रुप पे बच्चे अच्छे ऐड करते रहा करो। ठीक है, इतना जब फ्री में लेते हो कुछ थोड़ा बहुत वो रख दिया करो। चलो, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। ठीक है, फिर रखते हैं, बता देंगे हम लोग वहां पे इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, कब सेशन रखेंगे। ठीक, और वेबसाइट पे भी एक न्यू, जैसे ये लाइव सेशन है वैसे ही वेबसाइट पे टाइम लिमिटेशंस पे प्रैक्टिस का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ पे तुम टाइम लिमिटेशंस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। वी विल गिव सम पर्टिकुलर टाइम, जैसे एलआर का एक सेट हम लोगों ने अपलोड कर दिया, एलआर का सेट लेट करो, उसमें टाइम दे देंगे कि यू शुड सॉल्व दिस सेट इन 10 मिनट्स। वो टाइमर चलता रहेगा 10 मिनट्स का, और तुम्हें अपने आंसर्स कमेंट करने होंगे, उसमें सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। तो उसमें टाइम लिमिटेशन तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर तुम ऑफिस में बैठे हो, 1 घंटा नहीं फ्री हो, थोड़ा कम टाइम फ्री हो, देन यू कैन प्रैक्टिस देयर इन टाइम लिमिट ना, वहां पे छोटे-छोटे सेशंस कराएंगे। तो वेबसाइट पे भी सब्सक्राइब कर वो कर लेना, रजिस्टर कर लेना, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। ये 2-3 होते रहते हैं, डिसलाइक होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन काफी ज्यादा वो है ना, कंपटीशन बहुत है ऑनलाइन ना बेटा, थोड़े बहुत आते रहते हैं डिसलाइक। ठीक है, गुड नाइट।